Think of the girl who was denied schooling and married off at 12. The woman who is beaten up every night by her husband and harassed by her in-laws. The girl trafficked and sold to a brothel. The widow branded a witch and living in fear of being killed. Violence mars each of their lives. I am Dr. Mary Ibe from Pragya, India, working with remote and marginalized communities. With the support from the UN Trust Fund, we are addressing violence against women in 10 tribal districts. We work with 3,000 women and girls by building capacity and leadership in women, creating support networks and community-based helplines and services. We also work with men and boys, local civil society and law enforcement agencies. The program has been implemented across 10 districts in 5 Indian states, including Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, and Rajasthan. Through this program, we have made progress in building capacity and leadership amongst women, educating the public in order to bring about a change in gender-related attitudes, creating and strengthening support networks, and facilitating advocacy to prevent violence against women. 3,147 women across all age groups have formed 100 women's peer groups. They have been trained through Justice for Women kits to identify and respond to issues of normalized violence in their communities. महिला मेरे पास आती है कि मेरे ये हिंसा हुआ है, यूँ करके मैं उनके घर पे जाती हूँ और बताती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, और मैं उनको बातचीत करती हूँ कि तुम्हारा क्या समस्या है, मेरे को बताओ तो मैं प्रज्ञा संस्था वालों को बात करूँगी और आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी ज़्यादा यूँ. Each women's peer group has 3 leaders who have been trained as counselors and guide the members on health, nutrition, rights, and counsel the families on issues related to violence against women and girls. 20 या 30 महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और इनको हर महीने में एक बार मीटिंग करते हैं. Women's peer group members have started attending and voicing their concerns at Gram Sabhas. They are showing great vigor and courage to fight and challenge harmful social practices and gender-based violence. Women's peer groups have over the years transitioned from dialogue to action-oriented groups. हाँ, अबे तो 18 साल की लड़की भी है, 21 साल का लड़का भी है, तो शादी की रही है बे. पहले तो ये तरह के इतरा से शादी करता, अबे नहीं करे. मेरे खुद की सलाह है, मेरे 4 लड़कियां और 18 साल की होएगा तो पढ़ाऊंगा. खूब अनपढ़ समझता नहीं, अबे थोड़ा लोग समझवा लगेगा. मैं चुनाव में हिस्सा लेना चाहती हूँ, सबको जो समस्या है वो उसका समाधान करने चाहती हूँ. ताकत मिली है और जागरूक हुए हैं. Pragya has trained 90 eminent and respected social workers from the community who had been vocal about women's rights and empowerment as mentors in prevention of violence against women. Mentors are fostering a change in attitude towards gender equality through a massive campaign, reaching out to more than 15,000 people. They were also instrumental in identification of harmful local social practices affecting women and girls. সঁচাই ভাল লাগে এতিয়া মহিলাখিনি যে আগুৱাই আহিছে বা সবলীকৰণ হৈছে, সিহঁতে আগৰ দিনৰ নিচিনা এতিয়া গাঁও সভাত পুৰুষসকলক বাট চাই নাথাকে. গাঁও সভা ক'লে গোটেই মহিলাখিনি ওলাই যায় আৰু যি আঁচনিবিলাক তাত বাৰ্তালাপ হয়, আলোচনা হয়, সেইখিনি গোটেইখিনি সিহঁতে আগভাগ বা অংশগ্ৰহণ কৰিব. বয়সস্থ মানে 70 বছৰীয়া বুঢ়া এজনে মানে বলাৎকাৰ কৰিছিল. সেইটোৰ বিষয়ে আমাৰ গোটেই ৰাজখিনি মিটিং কৰিলে আৰু 70,000 টকাত মানে হেৰি কৰিব মীমাংসা কৰি দিলে. কিন্তু লাষ্টত গৈ সময় দিছিলে 2 মাহৰ ভিতৰত না টকাও নিদিলে আৰু সেই ছোৱালীজনী একো ন্যায় নাপালে. তো সেইটোৰ ওপৰত মই ক'লোঁ যে আপোনালোকে আমি থানাত দিব লাগিব, কেছটো জনাব লাগিব, থানাত দি পেলাই আমি কথাখিনি জনাব লাগিব. থানাই যেটো বিবেচনা কৰে সেইটোৰ অনুসাৰে আমি কাম কৰিম. সেইটোৰ মতে এতিয়া এজাহাৰ দিয়া হ'ল আৰু পুলিচে সেই মানুহজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিলে. এতিয়া Know Your Rights campaign, activities such as In Her Shoes card games, sensitize the community on gender inequity and gender-based violence. Street plays on gender-based violence exhorted bystanders and communities
to work to prevent violence against women. Gender sensitization workshops for village council representatives and training on gender budgeting and inclusive governance had led to more support for women's issues at the village councils and created an enabling environment for women and girls. पहले शराब का ज्यादा अपन अबे कटे कटे है हाँ पहले ज्यादा अबे धीरे धीरे सुधरवा लगी गया है. Information centers known as Sashaktikaran Center or Empowerment Centers were established. The centers provide the communities with information on their rights, government schemes, and legal provisions safeguarding them. These centers also provide the women with telehelplines and social legal referral services for gender-based violence. प्रज्ञा में हम लोग काम करते हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और हमारे पास एक अवेयरनेस किट है वुमेन के ऊपर, जैसे कि हमारा अधिकार हमारी चेतना, वो भी उनको मतलब दिखाते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, मतलब जो भी उनको जानकारी लेनी होती है उसमें से वो लोग मिल जाता है उन लोगों को. हमारा एक रेफरल सीट है जिसमें कि मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, लॉयर्स है, तो इनको हम लोग मतलब जो भी केसेस आते हैं वो सब हम लोग उन लोगों को रेफ़र कर देते हैं. सासरपुर गांव से एक महिला, तो वो शादी होने से उनके सास ससुर उनसे ताने मार रहे थे और उनका जो हस्बैंड है वो उनको पढ़ाई नहीं करवाने चाह रहा था और वो लड़की पढ़ाई करने के लिए चाह रही थी. फिर एक बार हमने उनके गांव में जाके उनके परिवार से हमने बातचीत किया, तो भी वो एक बार वहाँ से ले गए, तो वो तब भी उनके साथ और भी मारपीट कर रहा था. फिर हमने महिला थाने में उनका दर्ज कराया, वकील से हमने बात किया, फिर उनकी कार्रवाई की उनसे. एक महिला थी, उनके घर के पास नेबर थे उनका, तो उस बेटे के साथ एक इंसिडेंट हो गया था, तो जो नेबर थे उन्होंने मतलब सुना नहीं, बहुत बुरी तरह से मारा आयरन रॉड से, फिर बाल भी मतलब हेयर पुलिंग भी बहुत मतलब ज़ोर से किया, जैसे कि उनके हाथ में बहुत सारे बाल आ गए. जो विक्टिम थे उनका हस्बैंड अरुणाचल में रहते हैं, तो वो घर पे अकेली होती है, तो इसी वजह से वो वहाँ से चली आ गई, तेजपुर में यहाँ पे आ गई. मुझसे बात की, उनको मैंने काउंसलिंग भी किया, उनको समझाया भी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने ऑलरेडी पुलिस केस भी किया हुआ था, लेकिन पुलिस वाले मतलब इतने भी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे. फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर जल्दी कुछ करिए. जो परपेट्रेटर था वो भाग रहा था घर से, तो पुलिस ने जाके उनको अरेस्ट किया. मतलब जो हमारी विक्टिम है वो मतलब इजीली अपना घर जा सकती है, वहाँ पे रह सकती है. Gender-based violence observatories document cases of violence against women which form the basis for advocacy, liaisoning activities, and follow-up with panchayat members and the police. The gender-based violence observatories also function as a link for advocacy and networking. प्रज्ञा के साथ जो काम किए हैं, सबसे पहले तो सोशल नॉर्म्स और जो डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे पर एक समझ बनाई है कि हाँ ये सोशल नॉर्म्स है, ये घरेलू हिंसा है. पहले महिलाओं को ही समझ में नहीं आती थी कि मेरे साथ हिंसा हो रहे हैं. ये एक बहुत बड़ी बात थी जो हम लोगों ने उस ट्राइबल समुदाय में जाके अवेयरनेस जनरेशन किया है. इंगेज किया हम लोगों ने पंचायती राज के लोगों को उसमें, ताकि वो समझ पाएँ कि मेरे यहाँ इस तरह के हालात होते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस से लेके जितने भी समस्या हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. Observatory findings are shared biannually with multiple stakeholders in the district, including government agencies and CSOs, who meet to deliberate on action plans to counter the different forms of violence and take stock of progress against previous action plans. National-level consultations and workshops conducted under the program have helped propel a dialogue, build momentum, and advocate for uptake of the model to streamline services and measures to prevent violence against women. Lessons from the project have been shared with stakeholders from additional 66 districts with concentration of tribal population across 16 states and 1 union territory. Women are coming together in their struggle against violence. They are now being heard. मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपना मतलब खुद का वॉइस उठाए. अगर उनके साथ कुछ जुर्म हो रहा है, अगर उनके घर में कुछ अशांति हो रही है, तो वो अपना आवाज़ उठाए. अगर वो मतलब शाय टाइप की है तो ये बात नहीं है कि आप किसी से बात नहीं करोगे, आप एटलीस्ट अपने नेबर को बताओ. नेबर जाके किसी और को बताएंगे तो यही चीज़ आपको जाके ऊपर तक हेल्प करेगी. एंड प्लीज़ मतलब रेज योर वॉइस.
beginning has been made. Small steps of these marginalized communities in this journey are giant leaps in the lives of the girls and women. And the journey continues.